Hello, everyone, and welcome to this new and exciting podcast organized by Samadhan Life Sciences. As you all would be knowing, that Samadhan Life Sciences conducts podcasts regularly on interesting and diversified topics that are of interest to life science and biotechnology students. Now, lately, I have received a lot of queries related to GATB counseling. Now, you would be knowing that GATB has already given out the answer keys, and students have already calculated the marks that they have got in the examination. But they are in a confusion that at particular marks, at a particular level of marks, which colleges they should expect or which colleges they should apply to. And some students are also confused regarding the entire counseling process of GATB. So I wanted to invite someone on this particular podcast who could share her journey of GATB, who has ample of experience regarding GATB, who had herself filled different forms during the GATB counseling. So, in that respect, through my LinkedIn contacts, I have Divya with me, and Divya uh, has been connected with us since a long time through our YouTube videos, and she used to watch the YouTube videos. Also, got connected with us on LinkedIn, and we discussed a lot of things. So I decided to invite Divya on this podcast, and Divya would be sharing her journey of GATB counseling and which college she is currently studying, what different ranks she had got in different examinations. Now, uh, uh, I would want to introduce Divya. Basically, she is a fantastic student, academically extremely sound. Now, telling about her achievements lately: GATE Excel rank 132, AIMS M Biotechnology rank 13, GAT B rank 18, CUET PG also she qualified, and she's currently studying in JNU. So extremely extraordinary career up till now, and academically extremely sound. Now we would be learning from her that how she approached this particular counseling. Not only that, I would also ask her about her preparation strategy, because a lot can be learned from her academic side, and which colleges she was getting through GATB, which colleges she was getting through other examinations also. That everything we would be talking about. So without much ado, let me invite Divya. Thank you, Divya, for being with us today and sparing this time. Thank you. Extremely thankful to you. Yeah, Now, before I'm also hmm, yeah, I'm also before thankful to you for inviting me here. Thank you so much, Divya. Before getting into the examination part, I would want you to introduce yourself. I know you, but I would want the audience also to get a brief understanding that where have you done your bachelor's from, where are you doing your master's from. So, can you share your academic journey up till now? Yeah, so hello everyone. My name is Divya Sharma. So I had done my bachelor's in biochemistry from Daulat Ram College, Delhi University, and currently I am pursuing my master's in biotechnology from Jawaharlal Nehru University, and currently I am in my second semester. Wow. Okay, so just to give an idea to the audience that how did you come across our YouTube channel, and how useful did you find it during the preparation phase and also now? So, talking about your YouTube channel, so it was during my bachelor's when I get to know about it because just like other students, I also wanted to know that what are the various MSc entrances when I have to go through after bachelor's for admission to master's. So for that, I was searching information online on YouTube, and on YouTube I found that there are very few YouTube channels who provide information on it, and of them it was one of your channel who have got a very good detailed information about everything. So I have followed a lot during my bachelor's to know कि कौन से examinations होते हैं and what is their syllabus, what is their examination pattern, and through your YouTube channel, I kind of kept myself updated throughout the process कि कौन सी universities uh, के registration शुरू हो रहे हैं for masters and all those updates and all. So it do help me a lot. And besides that, even from preparation point of view, I got a lot of help from your YouTube channel. Like you
upload short videos regarding small concepts. So even those are very helpful. And besides that, from your YouTube channel, I also got to know about a book on bioprocess engineering. So I ordered that, and in that book, I found the concepts were given very nicely in a very concise manner, and along with examples, they were plain in a very easy manner. So I found that book very useful if in case you are preparing for examinations like GATE. So yeah, all these things do help me a lot. ओके। अब दिव्या आते हैं एग्जाम के सक्सेस के ऊपर। मैंने जैसा कि अभी इंट्रोडक्शन में भी बताया कि यू हैव क्लियर्ड ऑलमोस्ट ऑल द एग्जामिनेशंस दैट केम योर वे। आप गैट भी क्लियर कर चुकी हैं, गेट भी क्लियर किया आपने, उसके अलावा एम्स का एग्जामिनेशन भी क्लियर किया। दैट्स रियली इनक्रेडिबल। आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बता सकती हैं, जिस ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी उससे सीख सकें। Yeah, so talking about my preparation strategy, it can be divided into three phases. So, सबसे पहला it's the conceptual knowledge. So for that, whatever examination you are targeting for, first you should know about the syllabus कि उसमें वो पूछ क्या है, तो उसके आपको topics पता होने चाहिए. So usually जो भी MSc entrances होते हैं, उन सब में कुछ common topics होते हैं, जैसे कि biochemistry हो गया, molecular biology, cell biology, genetics. So these are the few common topics you should know about that. And then in my case, I prepared for them during my bachelor's. Like in my bachelor's, all these things were taught. So I used to prepare handwritten notes for end semester examination या फिर जब हमारी पढ़ाई होती थी, so मैं handwritten notes प्रिपेयर करती थी using standard books. For example, I used Leninger for biochemistry. उसमें for I used that book for making notes on enzyme kinetics, metabolism. तो इससे मैंने अपने खुद के notes में, and that actually gave me better understanding. It not only helped me for my end semester examination, but also during MSc entrance also it helped me a lot. Also, I see that many students usually use books like Pathfinder. I would say these books are good, but they just give you answers just directly. उसके पीछे का concept is something you could know only after reading in detail. So that's why I feel your notes are important. And जो ये books होती हैं like Pathfinder, it's you can use them for revision purposes, like just want to go through the concepts कि क्या गया. So for that purpose, these books are good. And then second thing which comes is practicing questions. After you had cleared your concepts, उसके बाद you have to practice questions regarding that particular subject. like आपने जो भी subject पढ़ा, you studied genetics, then उससे related you have to solve MCQs. So in my case, एक Pathfinder की एक book होती है for MCQs. That जो उसके MCQs हैं वो काफी अच्छे level के सही होते हैं. So you can use that book for MCQs. In my case, I use that book. And then third important thing which comes is practicing PYQs. Whichever examination you are targeting for, you need to go through its PYQs. You need to analyze them, that what kind of questions are being asked and what the examination is demanding from us. So all the combination of all these three things, practicing questions, conceptual knowledge, and going through PYQs would make you easily clear any MS examination. Okay. Now, since you have cleared almost all the examinations that came your way, a lot of students keep asking me that how do we prepare for GATE, how do we prepare for GAT-B, or how do you prepare for CUET PG? I mean, do you, since you've qualified all these examinations, do you approach each of these examinations in a different way? Or, I mean, every exam is the same, the syllabus is almost the same. So, do you Yeah. approach it in the same way? Hmm. Yeah, exactly. As you said, जो भी इन examination का syllabus है, it almost the overlapping. जो concepts हैं वो इनके same रहते हैं. But the only differential step which lies is PYQs. So आपको जो भी examination you are targeting, उन सभी के you have to go through their PYQs at least 10 years. Because going through PYQs it gives you a kind of knowledge that what kind of questions are being asked oftenly, what kind of topic is being repeated, so that you can practice that thing clearly. So whichever examination you're targeting for, उसके PYQs at least 10 years practice करना और उनको analyze करना is very important. Okay. Otherwise the concepts remain same. Yes, really nicely put. Concept remains the same. It's just that the type of questions that are asked in the different examination varies.
Now, for example, CSIR asks in-depth questions. You should have in-depth knowledge while you are answering CSIR questions. But papers like GATB, they are very superficial in nature. You do not find questions that demand very in-depth knowledge. Now, talking about the GATB counseling, I mean, this is why we have organized this particular podcast. क्योंकि आपने GATB counseling दी थी पिछले साल और आपको बहुत अच्छा वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस आपको मिला है वहाँ पे। तो क्या आप बता सकती हैं कि गैटबी की काउंसलिंग प्रोसेस कैसी होती है, कैसे काम करती है? अभी जैसे आपको भी पता होगा कि आंसर की रिलीज हो गई है, सारे स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स मिला लिए हैं, आपने भी यही किया होगा लास्ट टाइम। तो उसके बाद का प्रोसेस थोड़ा सा बताइए। So talking about the GATB counseling process, so once your results are declared and once the merit list is out, so उसके बाद क्या होता है कि जो भी institutes होते हैं, they open their portal for registration. So whichever institute you have targeted for, you have to individually go through their websites और वो एक साथ में एक information broker भी निकालते हैं for masters admission. You have to go through them, you have to register. साथ में एक timeline भी देते हैं that till this deadline can apply to their institute and then वो डेट भी बताते हैं that at which they will जो उनकी मेरिट लिस्ट है वो कब आएगी. सो यू हैव टू कीप एन अपडेट अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेंगे एंड देन इफ यू हैव गॉट योर नेम इन दी मेरिट लिस्ट देन दे वुड आस्क यू फॉर अपलोडिंग योर documents and all, for example, just 10th or 12th mark sheet, and if there is any category certificate. So after uploading the document, then they would also call you for physical verification of documents, which actually confirms your admission once you do with the physical verification. So this is the general process that is followed for GATB counseling at any institute where you go. Okay, just confirming that when you are going through the GATE counseling, there is a centralized portal called as COAP that is available for the GATE counseling. Is there any centralized portal available for GATB also, or you have to just directly apply to each and every institute separately? या सो जैसे कि गेट में एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल होता है वेयर दो ऑल दोस हैव क्लियर्ड एग्जामिनेशन दे कैन अप्लाई फॉर इट. लेकिन जो गैट एग्जामिनेशन है उसमें ऐसा नहीं होता है. उनमें उनका कोई कॉमन पोर्टल नहीं होता है वेयर कुड अप्लाई. इट्स दैट कि जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं यू हैव टू इंडिविजुअली गो टू दैट वेबसाइट्स और वहाँ पे वो अलग से अपना registration open करते हैं. So there you have to apply. So this is so that's why जो GAT है ये through admissions होता है. It's slightly different from GATE. यस राइट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ पे बताई। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने गेट भी दिया होता है और गैट भी दिया होता है, वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं कि यहाँ पर भी क्या कोई ऐसा सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस होगा क्या? ऐसा नहीं होता है। हर एक इंस्टीट्यूट में जाइए, उसकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पोर्टल ढूंढिए, पोर्टल पे अप्लाई करिए। अच्छा, एक बात और है दिव्या कि इज applying to each and every college, does it cost separate fees also, or is it free for students to apply? So it varies from institute to institute. Mostly the institutes where you apply वहाँ पे usually registration fees नहीं होती है, but a Okay. few institutes do charge you fees. For example, when I applied for JNU, they there you do have to, I guess, pay a fee. And then for Jamia and then for DU, all these institutes where you apply, they do charge some, I guess, around 500 rupees fees. So उससे ज़्यादा नहीं होती है. Most of the institute don't usually charge even any fees. ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो गैट बी के स्कोर्स को एक्सेप्ट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। Okay, so the institutes, those acceptors admission, who take admission to GATB school, so उसके लिए जो Department of Biotechnology है वो एक list निकालता है, list of participating institutes, and as I remember there are around 70 to 80 institutes जो हम्म, कि उसमें आते हैं. हम्म, So उसमें काफी prominent institute if I talk about तो उसमें एक JNU ही हो गया और उसमें DU हो गया, उसमें जामिया मिलिया हो गया, plus even IIT Indore, BHU, HCU, even RCB, RGCB. These सारे institutes they take their admission through GATB scores. ओके। आई वांट टू ऐड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे एमएससी और एमटेक दोनों, जो स्टूडेंट्स एमएससी में जाना चाहते हैं, एमटेक में जाना चाहते हैं, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स अप्लाई थ्रू गैट बी। एंड
If you want to know the exact number of colleges or the exact list of colleges that are taking admissions through GATB, you can go through the brochure of that particular year, and at the end of the brochure, the list of the colleges is provided, and you can find out which is the college of your interest, and you can apply to that. Mm. Now, Yeah. uh, अभी आते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक क्वेरी होता है कि व्हाट शुड बी द प्रेफरेंस ऑर्डर व्हेन यू आर अप्लाइंग टू द इंस्टीट्यूशंस। अब जैसे कि जैसे कि आपकी रैंक बहुत अच्छी आ गई थी, तो आपके पास तो बहुत ऑप्शंस थे कि मैं इंदौर जाऊंगी, मैं जेएनयू जाऊँ, मैं बीएचयू जाऊँ, मैं एचसीयू जाऊँ। तो आपने कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर लगाया कि हाउ विच इन विच इंस्टीट्यूट शुड आई गो? कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसको स्टूडेंट्स ध्यान में रख सकते हैं? Yeah, so talking about the preference order, so first of all, you look for institute जो कि आपके particular state में, since I was from Delhi, so I majorly look for those institutes जो कि masters में admission provide कराते through GATB, तो उसमें I applied for JNU, I applied for Jamia Mills, I applied for DU also. So usually you look for all the major prominent institutes you have in your state, and then it's also your rank, which is also one of the major factors. And then while you decide which college you want to get there, so उसके लिए first of all you have to go through the research facilities, or you can contact your professors or your seniors if you know कि वहाँ पे कैसे कैसे चीजें होती हैं, वहाँ पे कैसी रिसर्च होती है, व्हाट इज जो उनका एकेडमिक कैलेंडर कैसा होता है, तो यू हैव टू गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स फॉर दैट। वाह! बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया कि सबसे पहले तो आपको देख लेना चाहिए कि वहाँ पे फैकल्टीज़ वगैरह कैसी हैं, फैसिलिटीज़ कैसी हैं। उसके बाद आपकी रैंक क्या है, वो भी इम्पोर्टेंट है, और फिर आप कहाँ पे बिलॉन्ग करते हैं। अगर आपके लिए डिस्टेंस मैटर करता है, तो आप उस स्टेट के ही या। कॉलेजेस को चूज़ करें। तो अब आते हैं जो मेजर क्वेश्चन मेरे पास आता है कि एट व्हाट रैंक डू टॉप इंस्टीट्यूट्स लाइक जेएनयू, बीएचयू, एचसीयू, आईआईटी इंदौर, आरसीबी फरीदाबाद, अगर इन कॉलेजेस को कोई स्टूडेंट टारगेट कर रहा है, तो कितनी रैंक होनी चाहिए अप्रॉक्सिमेटली? थोड़ा सा बताइए इसके बारे Yeah, so talking about JNU, so for general category, if you want an admission here, so around a score of 170 you should have for the general category. Baki के लिए तो of course it will be less. में। And then talking about institutes like BHU, HCU, तो वहाँ पे usually cutoff goes as low as around 100 to 120. And ओके। then talking about IIT Indore, there you could get admission if you have got a score of around 130 to 140. That's a kind of a safe score you can have. ओके। And then talking about institutes like RCB, so there what happens is कि वो सबसे पहले अपनी एक मेरिट लिस्ट निकालते हैं based on a particular cut off for और उसके basis वो फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं. So in order to be called for interview, you should have a score of at least 150. ओके। So, in general, speaking, a safe score that we should target for GATB should be around 170 or so. ओके। तो 170 के आसपास अगर है, तो आप मुझे लगता है कि जेएनयू आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन ये जो जो भी दिव्या ने जो मार्क्स बताए, वो पास्ट ईयर के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उन्होंने बताया। अभी किस भी ईयर में पेपर जो है वो टफ आ रहा है या इजी आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उस साल में कितने किस कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब दिव्या के केस में शी हैड गॉट अ फैंटास्टिक रैंक, तो ऑल द कॉलेजेस वर अवेलेबल टू हर एज पर माय नॉलेज। तो अप्रोक्सीमेटली 170 180 पे जेएनयू मिल सकता है, इसकी बात बताएं। और एचसीयू या बीएचयू ये थोड़े से और नीचे जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 140 150 तक आप लेके आते हैं, तो आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, राइट? तो Yeah. अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपने आपने अपने शॉर्ट लिस्टिंग की क्राइटेरिया बताया कि सिंस यू आर फ्रॉम दिल्ली, तो आपने दिल्ली के कॉलेजेस चूज कर लिए, एंड फिर उसमें तो जेएनयू ऑफ कोर्स सबसे अच्छा आता ही आता है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स गलतियां करती हैं काउंसलिंग के टाइम पे। तो व्हाट आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स मेक ड्यूरिंग काउंसलिंग, और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ऐसा? Hmm. Yeah, so one of the
mistake that I had observed is the lack of awareness. Mostly students aren't aware कि कौन-कौन से institutes के applications कब निकल रहे हैं or how do they have to apply. So that is one of the major thing. Like even talking about my case, I didn't know about this fact that in order to apply for RCB MS PhD program that takes admission through GATB score, उसके लिए you have to apply before GATB results are declared, not after that. Like I guess जब आप GATB के लिए अप्लाई करते हैं अराउंड मार्च और सो तो तभी उसके भी एडमिशन फॉर्म्स निकलते हैं एंड अराउंड मार्च अराउंड दैट टाइम ओनली यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट ना कि आफ्टर GATB results. So Okay. this is so first is the awareness thing. So for that you could follow YouTube channel like yours YouTube channel. Students can follow to be aware about all these things. And then second thing that I see is that usually जो students हैं like if they have if got a score of around 150 or even 140 they just kind of think कि मतलब मेरा तो कहीं भी admission नहीं होगा like before even applying they make their mindset in such a way. So what I feel that irrespective of whatever your score is, if your name is in the merit list, if your name is in the qualified list, you should apply for each and every institute you are targeting for. कोई मतलब कोई second thought आना ही नहीं चाहिए. You should apply for each and every institute you think you should get into. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात दिव्या ने यहाँ पे बताई। दिव्या ने जब स्कोर कट ऑफ स्कोर बताया था तो उस समय भी मुझे एक चीज़ बतानी थी, मैं मेरे से मिस हुई कि हर कॉलेज में मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होती है। इट्स Exactly. नॉट दैट Yeah. कि एक ही बार में सारी सीटें भर जाती हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि एक बार काउंसलिंग हुई, अब 170 या 180 पे कट ऑफ खत्म हो जाएगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग बिकॉज स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर डिफरेंट कॉलेजेस। अब किसी को जेएनयू मिला था बट उसका गेट में भी सिलेक्शन हुआ था, लेट अस से कि ही गॉट इनटू आईआईएससी, उसको आईआईएससी मिल गया या कहीं पे और मिल गया, कुछ और कॉलेज क्वालिफाई कर लिया, अब्रॉड चला गया। तो स्टूडेंट्स दे शफल कंटिन्यूअसली, तो वो अपनी सीट छोड़ते हैं। तो मल्टीपल राउंड्स ऑफ काउंसलिंग आते आते बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज के भी जो स्टूडेंट्स जिस रैंक पे जा सकते हैं वो भी बहुत नीचे आ जाता है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू बी अवेयर, एज शी सेड करेक्टली, यू शुड बी हैविंग यू शुड बी फोकस्ड अपॉन द काउंसलिंग डेट्स कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से शुरू है, थर्ड राउंड कब से शुरू है। उस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रख करके फिर आपको और हर कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, जितने भी कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सको। इफ मॉनिटरी कॉन्स्ट्रेंट इज नॉट देयर, अगर आप ये नहीं देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फीस वगैरह लग रही है, तो यू शुड बी अप्लाइंग टू मैक्सिमम कॉलेजेस पॉसिबल। अब नेक्स्ट Mm. क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिव्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पूछते रहते हैं मुझसे। आपको तो एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी मिला था एंड देन ऑल्सो यू लेफ्ट इट। आपने क्या दिमाग में सोचा कि यार मेरे को जेएनयू जाना है, एम्स एम बायोटेक्नोलॉजी नहीं जाना? मुझे पता है, मैंने एडवाइस किया था, लेकिन लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए कि आपको क्यों आपने एम बायोटेक्नोलॉजी छोड़ा और जेएनयू में आए? Yeah, I do have that option to go for AIMS M Biotechnology program, but I went for MSc Biotechnology Engineering. And one of the major thing was कि AIMS में जो biotechnology course है, it's medical biotechnology. So there they provide masters in medical biotechnology. So one of the major factor is that I don't want it to narrow down my field. Like if I'm choosing for biotechnology, then I wanted to explore all the related fields and all the options that are available. So that's why I chose for MSc in biotechnology program offered at GMU. ओके। That was one thing. And then second thing was that कि since एम्स का अपना MSc entrance test होता है while JNU में they take admission through their GATB score, so there you are entitled to get a stipend of 5,000 rupees per month, but in 2024 it wasn't like that. They don't provide you with any financial assistance also in the case of AIMS. So these were the few major reasons I applied for gym. मुझे याद है कि जब आपका दोनों में सिलेक्शन हुआ था तो यू हैड मैसेज्ड मी अपॉन लिंक्डइन आस्किंग कि सर हमें किस में जाना चाहिए। तो आई हैड आल्सो एडवाइज्ड यू कि आपको जेएनयू ही लेना चाहिए, राइट? गुड चॉइस बेसिकली, क्योंकि एम्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। वो एक मेजर फैक्टर है वहाँ पे। अच्छा, जेएनयू के ऊपर आते हैं। आप मुझे बता सकती हैं कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का जो कोर्स होता है,
How is the course of MSc Biotechnology in JNU with respect to faculty, research, infrastructure, or the students over there? How is it about studying in JNU? So talking about the study at JNU, I would say that I'm currently in my second semester, so I feel that it's one of the best choice you can have if you are targeting for fundamental research because यहाँ पे बेसिक रिसर्च पे बहुत फोकस किया जाता है लाइक इन बीएससी वी आर टॉट अबाउट मैकेनिज्म्स वी आर टॉक अबाउट वी आर टीच about the signaling pathways but here when you come at when you go for masters in engineering there you are taught कि कैसे वो pathways discover किए for example BSc में you just study about lack of operon कि वो कैसा होता है but here you get to study कि वो चीज़ discover कैसे हुई how scientists liquidated that pathway Mhm. सो आपको एक तरह से वो आपके रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज होती हैं सो इवन हियर द फैकल्टी मेंबर्स आर आल्सो सच एंड अलोंग विद दैट जो usually जो dissertation it's around 6 months for most of the institutes but here at JNU you get to do a dissertation for complete 1 year so your dissertation starts in the third semester only that Okay. is one of the major thing I like and Okay. then another thing that I liked about JMU was that usually जो research institutes होते हैं उनकी फीस काफी ज्यादा होती है इवन जो काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं उनकी फीस यूजुअली काफी ज्यादा होती है बट हेयर एट JMU they charge very nominal fees that anyone could pay so it's kind of affordable too that's why I really liked going for masters in JMU. Wow. So correct. I mean, JNU is a fantastic university, as Divya said. Economically also, I mean, you do not need to pay very hefty fees like most of the other colleges. So that is also one more important thing. So what's the environment like at JNU for a biotechnology student, specifically biotechnology, academically, socially, कैसा है biotechnology का department work? Yeah, so talking about academically, usually जो यहाँ का schedule है, it's quite hectic. Like from 9, so सबसे पहले we have got our theory classes from 9 to 1, and then उसके बाद 2 बजे से हमारे practicals होते हैं that usually last till 5 or 6. So the environment is quite hectic, but at the same time you have got your professors, you have got your PhD scholars who help you during practicals so, besides that, you got a lot of research exposure here, and also one of the unique thing about JNU is that since it's located in the on the ridge of Aravali Hills, so यहाँ पे buildings से ज़्यादा यहाँ पे trees हैं, so the thing is that you get to study in an environment close to nature. Like even while you are studying, you would hear the birds chirping outside. So that actually refreshes you up. So you are never stressed here, though you have got a hectic schedule, but still since being close to nature, like here at JMU, it's quite famous for नील गाइस वो आपको काफी कॉमन यहाँ पे दिख जाएंगे तो Okay. and even यहाँ पे जो लाइब्रेरी है it the central library it is open 24/7 you can study anytime so academically and socially JNU is very good in all of these things. Okay. Yeah. Correct. So अब बात करते हैं कि what would be your advice to the aspirants who would be uh, waiting for the results and ऐसे लोग जो जिनकी रैंक गैट बी में लगभग 50 to 200 के बीच में अगर है किसी की रैंक तो what would you suggest regarding the colleges selection? What according to you should be the colleges that students can select? Talking about college selection, as I said that you have got if your name is in the merit list, then you have got very high chances of getting into universities for master's program through GATB school because काफी central universities, काफी state universities होती हैं, so you should apply everywhere. And also most of the times, as you said, what happens is though एक university ने cut off decide करी, suppose it's 150 or 160 उसके basis पे उसने first list निकाली but not all the students who have got their name in the list would take admission some Mhm. students won't accept their offer letters so at that time you have got the chances to suppose you are in the waiting list so you could get so you could get admission in there so that's why I say that whatever your rank is you should always apply for the master's program.
ओके, राइट। अच्छा, अब पूछना चाहता हूँ कि डू यू हैव एनी टिप्स फॉर एस्पायरेंट्स अपीयरिंग दिस ईयर फॉर गैटबी और प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जामिनेशंस लाइक यू योरसेल्फ डिड? क्या टिप्स आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को? Yeah, so the tip that I would like to give is that first of all, build a concept clarity while you are in your bachelor's. Don't wait for the last year कि जब मेरा final year होगा bachelor's में, then only I would start preparing for MSc. When you are going through the bachelor's, तभी से अपना base बनाना start कर दीजिए. And besides that, make a habit of practicing MCQs. Whatever topic or thing you study, उससे related MCQ solve कीजिए. And then whichever examination you are targeting for, going thoroughly through its PYQs is very important. Wow, correct. So the things that you said are extremely important while you are targeting any particular exam. Now, the final question to you, Divya, is कि अब what is your I mean, what are you looking forward to now? Do you want to do a PhD or do you want to go for a particular job? So, what are your future expectations? So in my future, I am mostly targeting for PhD. Majorly, I am thinking for PhD in India, and since here we have got a professor, so as I said, कि जिनमें में fundamental research काफी होती है. So I am majorly interested towards exploring things in cell biology or molecular biology. So that's why I majorly think of going ahead for PhD. ओके, ओके, करेक्ट। थैंक यू सो मच दिव्या, आपने इतना समय हमारे लिए निकाला। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पॉडकास्ट से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि गैटबी को लेकर के, उसकी काउंसलिंग को लेकर के, रैंक्स को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जितना भी आपने यहाँ पे बताया रैंक्स को लेकर के, कट ऑफ्स को लेकर के, काउंसलिंग को लेकर के, दैट वुड बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डिफरेंट स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, आपने इतना समय निकाला पूरी ऑडियंस की तरफ से और समाधान लाइफ साइंसेज की पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच। मैं फिर आऊँगा एक नए स्टूडेंट की कहानी लेकर के, उनकी जर्नी लेकर के, ताकि आप अगेन और मोटिवेटेड हो सकें और बेहतर ढंग से प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।